Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. तो लास्ट वीक हमने देखा कि ट्रम्प टैरिफ कंसर्न्स के चलते बिटकॉइन का प्राइस $79,000 तक डिक्लाइन हुआ और लास्ट 2 वीक्स में स्पॉट बिटकॉइन ETFs में भी $3.6 बिलियन के आउटफ्लोज हुए. सो बीइंग अ बिटकॉइन इन्वेस्टर आप वरिड होंगे, बट यू नीड नॉट टू वरी क्योंकि ब्लूमबर्ग के सीनियर ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनास का कहना है कि ये सिर्फ मार्केट की नेचुरल साइकिल का एक पार्ट है. इन फैक्ट दीज आउटफ्लोज अकाउंट फॉर लेस दैन 2% ऑफ टोटल एसेट्स. मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम ETF एसेट मैनेजर्स हैं वो अब भी $115 बिलियन से भी ज्यादा एसेट्स होल्ड करते हैं. इन फैक्ट बैंकिंग जायंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अभी भी 2028 तक बिटकॉइन का $500,000 का प्राइस प्रेडिक्शन मेंटेन किया है. So in this special show, we are going to talk about why are Bitcoin ETFs experiencing outflows, where is the money flowing, and next on new crypto ETF filings. But before we start, don't forget to like, share, and subscribe to our channel to stay ahead in the crypto market. तो फरवरी 25 को स्पॉट बिटकॉइन ETFs में नेट आउटफ्लो हुआ ऑफ $937.9 मिलियन यानी कि $1 बिलियन के आसपास, जिसमें मोस्ट ऑफ द आउटफ्लोज वर लेड बाय BlackRock, Fidelity and WisdomTree. And on February 26, BlackRock's IBIT ETF alone saw its largest single day outflow of $418 million. अब इसका सबसे बड़ा रीजन था इन्वेस्टर्स शिफ्टिंग टू सेफर ऑल्टरनेटिव्स. पिछले एक हफ्ते में जहां बिटकॉइन ETFs में आउटफ्लोज हुए, वहीं गोल्ड ETFs में ओवर $4 बिलियन के इनफ्लोज हुए. अब इससे पता चलता है कि कई इन्वेस्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स की वजह से ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. Now, another interesting aspect is data by Velodata, which indicates that difference between spot price and futures has dropped to 4%. Well, this is the lowest since the ETF started trading in January 2024. और इसे कैश एंड कैरी या बेसिस ट्रेड भी कहा जाता है. बेसिकली बेसिस ट्रेड में हेज फंड्स एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जहां वो स्पॉट बिटकॉइन ETFs बाय करते हैं और साथ ही फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशन भी ले लेते हैं. ये एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है जो कि इन दोनों मार्केट्स में मिसप्राइसिंग के चलते प्रॉफिट अर्न करने पर फोकस करती है. In fact, as per 10x research head Marcus Thielen, 44% of US Bitcoin ETF buying is for hodling, यानी holding for a longer period, while 56% is likely tied to arbitrage strategies, where traders buy spot Bitcoin ETF through ETFs while simultaneously shorting Bitcoin futures and profiting from the difference between spot and future prices. So to understand in detail about the ETF outflows, I am joined by Mr. Sonu Jain, Chief Risk and Compliance Officer at 9.0 Capital. So last week हमने देखा कि there have been significant volatility in the BTC market. BTC broke its crucial support at 88,000, 85,000 and then went all the way down to $78,000 per BTC, which is a significant fall. So BTC has fallen from its high of $108,000 to $78,000 in the last week, and because of that we saw the traditional markets have a negative sentiment towards BTC, and we saw a lot of investors pull out money out of the IBIT, which is the BlackRock's Bitcoin fund, and other Bitcoin ETFs also. So the outflows totaled almost to $3.2 billion, which means that the traditional investors are not very much accustomed to the volatility of crypto markets. But जैसे कि हम देख रहे हैं, BTC is now back to almost $92,000, and yesterday President Trump has announced finally the long-awaited news of the US creating the strategic Bitcoin reserve along with Ethereum and a few other crypto tokens. So this is a very big boost for the Bitcoin and the crypto ecosystem, क्योंकि एक बार ये रिजर्व बन जाता है, other countries and other states within the US will also start modeling it and they will start creating their own version of reserves. और जैसे कि हम सबको पता है कि Bitcoin supply is restricted, that means जैसे जैसे countries will start buying it, the supply starts reducing और फिर this will drive up the demand. And we already are predicting that BTC will touch $500,000 by 2028 and ultimately $1 million by 2030 to 2032. So over a long-term horizon of 5 to 7 years, BTC is still going to beat all other asset classes. So instead of playing the short-term volatility which crypto is known for, investors should focus on a long-term vision and stay invested for at least 5 to 7 years so that you can yield the benefits of this asset class.
So despite the market downturn and short-term outflows, the good news is new ETF filings continue to emerge. Asset manager Grayscale has filed for a Cardano ETF और ये एप्लीकेशन SEC ने acknowledge भी की है. Also, Grayscale ने Polkadot.ETF के लिए भी फाइल किया है. Asset manager Bitwise has also filed for an application for Aptos ETF. So overall, जहां Bitcoin ETFs में short term outflows हो रहे हैं, the broader institutional outlook is bullish. Experts emphasize कर रहे हैं कि ये fluctuation सिर्फ market cycle का part है और आपको panic नहीं करना चाहिए. Bitcoin ETFs still hold billions in assets और जैसे ही market conditions stabilize होती हैं, हम फिर से inflows देख सकते हैं. That's all for today's ETF Watch Crypto Edition. Stay tuned for more updates and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. See you next time.